means bursting of a cell when placed in pure water. If not pure, it shall be hypotonic. When placed in hypotonic solution, this is cytolysis. Or hemolysis means bursting of RBCs, bursting of erythrocytes, bursting of red blood cells when placed in pure water or when placed in hypotonic solution. So this is beaker. This contains pure water. You have taken this animal cell without cell wall, naturally, evolutionarily adapted in such a way, it gains the water. It gains the water. It finally gains the water. Stage comes bursting. So hence, bursting of this cell, particularly RBC, when placed in such solution or pure water, this is hemolysis. This is called as cytolysis. But एक term, hypertonic, more solute concentration. दूसरी term, hypotonic, less solute concentration. Third term, isotonic, same solute concentration. Fourth, end osmosis, gain of the water. Fifth term, exosmosis, loss of water. And another term, bursting of the cell, that is called as hemolysis or cytolysis. Then there is another term. This is important term you have to know. This is called as chemiosmosis. बेटा जिसको अंडरस्टैंड करना होगा कि एटीपी कैसे बनता है, विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके लिए केमियोस्मोटिक थ्योरी जो पीटर मिचेल नोबेल लॉरेट दैट हैड प्रपोज्ड हियर, उसमें केमियोस्मोसिस का कंसेप्ट आता है. यहां पे मुझे वो थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं करनी है, जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके लिए मैं दूंगा. यहां पे केमियोस्मोसिस में क्या होता है. सपोज बेटा एक मेम्ब्रेन है, दिस इज मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें ऑस्मोसिस का कंसेप्ट आता है. दिस मेम्ब्रेन कैन बी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. बेटा यहां एक क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, क्योंकि एटीपी वहीं से बनता है यूकेरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. ग्रेडियंट तो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में भी होता है. बट यहां पे एक चैनल है, यहां पे एक चैनल है, एक प्रोटीन टनल है यहां पे. दिस प्रोटीन चैनल इज कॉल्ड एज एटीपी सिंथेस. इस चैनल का नाम है एटीपी सिंथेस. बेटा यहां पे H पॉजिटिव आयन्स, जिनको आप बेटा प्रोटॉन्स कहते हैं, यहां प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है. यहां प्रोटॉन्स है लेकिन प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन कम है. जो एंट्रेंस के स्टूडेंट्स होते हैं, दे विल से द pH इज एसिडिक हियर एंड सो इज अडॉप्टेड हियर. अब मुझे बताइए, यहां प्रोटॉन्स ज्यादा है, यहां प्रोटॉन्स कम है. ये X है, ये Y है. जरा आप मुझे बताइए प्रोटॉन्स कहां से कहां की तरफ मूव होंगे. सर X से लेके Y की तरफ मूव हो जाएंगे. मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन to lower concentration down the concentration gradient, this is called as chemiosmosis. Here मैं फिर से बताता हूं, ये मेम्ब्रेन है, एक साइड से प्रोटॉन्स ज्यादा है, दूसरे साइड से प्रोटॉन्स कम है. प्रोटॉन्स में नेचुरल एबिलिटी होती है, वो हायर से लेके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ स्पॉन्टेनियस समूह होते हैं. एक एंजाइम से, एक प्रोटीन से, एक प्रोटीन चैनल से, जिसे हम एटीपी सिंथेस कहते हैं. बेटा याद रखना है, अगर प्रोटॉन्स यहां से लेके यहां तक आएंगे, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे प्रोटॉन्स, इसे हम कहते हैं केमियोस्मोसिस. इसीलिए मैं यहां पे आपको डिफाइन करूंगा व्हाट इज केमियोस्मोसिस. दिस इज टर्म
that is chemiosmosis. It is movement of protons, movement of ions, movement of H positive ions from higher concentration, from their higher concentration to lower concentration, to their lower concentration, across semi-permeable membrane or simply across membranes. Across membranes. बेटा आपने याद रखना है, ये membranes में एक खास चैनल से निकलते हैं. This specific channel via which they are lost, this is ATP synthase. Hence, movement of those ions from higher concentration to lower concentration across ATP synthesis, chemoosmosis. And hence, you have to say it is down the concentration gradient. It is down the concentration gradient. Down the electrochemical gradient, rather, you have to say. जब भी ions move होते हैं, down their electrochemical gradient, from higher to lower concentration, or specific channels here, specific proteins here, all this concept as chemiosmosis. और बेटा याद रखना है, एटीपी जो होता है, ये आगे हम बताएंगे, adenosine triphosphate, which is the energy currency of this cell, ये इसी इवेंट के थ्रू बनती है, ये इसी chemiosmosis से बनती है, क्योंकि chemiosmotic hypothesis पीटर मिचेल ने इसी बुनियाद पे दिया था. सो बेटा एक टर्म थी that was called as chemiosmosis. क्या आई होप कि आपने इसको भी अंडरस्टैंड किया है. अब लास्ट एक टर्म हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्लांट फिजियोलॉजी. सर व्हाट इज दैट? दिस इज concept of Turgor pressure. You call this as Turgor pressure. I call this as hydrostatic pressure. You call this as hydrostatic pressure. I call this as pressure potential. You call this as pressure potential. I represent it by psi P. It is pressure potential. It is represented by a symbol that is psi. Small p is written. मैं आपको समझाऊंगा. What is Turgor pressure? बेटा ये एक प्लांट सेल है. दिस इज अप्लाइड टू द प्लांट सेल, नॉट टू द एनिमल सेल. इट इज प्लांट सेल बाउंड बाय दिस सेल वॉल. दिस इज प्रॉपर्टी. दिस इज सेल वॉल. बेटा ये इसका प्रोटोप्लाज्म है. दिस इज प्रोटोप्लाज्म. अभी इसके अंदर वाटर तो कम है, वाटर इज लेस. ये इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनिल्स है, ये इसके अंदर वाटर है. What you have done, आपने इस प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला. You have placed this plant cell within this hypotonic solution. सर अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इसको हम डालें, that means it gains the water. इसीलिए मैंने एरोज दिखाए towards the plant cell. सर कंसेप्ट क्या है? हमारे पास प्लांट सेल है. प्लांट सेल को आपने प्योर वाटर में डाला, इफ नॉट हाइपोटोनिक सोल्यूशन. इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर. सर देन अगर प्योर वाटर में डाला बेटा, इसने एंड ऑस्मोसिस दिखाया. सर एंड ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल. जब वाटर एंटर हुआ है प्रोटोप्लाज्म में, तो जाहिर सी बात है ये प्रोटोप्लाज्म स्वेल होता है. अगर प्रोटोप्लाज्म स्वेल होता है, एक्सपैंड तो होता है, दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाउ मूव्स टुवर्ड्स दिस साइड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव्स नाउ टुवर्ड्स दिस साइड. यहां से आपको मैं दिखाऊंगा. आई विल ट्राई टू शो दिस. अभी यहां आया है, इसकी लाइन तो अब यहां आई है, और वाटर ऐड हुआ है. दैट मीन्स ये यहां की तरफ जा रहा है. इट गोज टूवर्ड्स,
it goes towards, it moves towards, it moves towards here, it moves towards here, it moves towards here. और भी वाटर ऐड हो रहा है क्योंकि गैप है, अभी सैचुरेशन तो नहीं हुई है। एक स्टेज जाता है जब ये प्रोटोप्लाज्म एक पॉजिटिव प्रेशर इस सेल वॉल पे लगाता है। दैट मीन्स अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां था, इट मूव्स टुवर्ड्स दिस साइड, इट मूव्स टुवर्ड्स दिस साइड, इट मूव्स टुवर्ड्स दिस साइड, दैट मीन्स ये सेल वॉल पे प्रेशर डेवलप करता है। दैट प्रेशर which is developed by this cell, which is developed by the entry of the water into the cell towards this cell wall, वो प्रेशर जो एक सेल ने एक सेल वॉल पे डेवलप किया वो एक पॉजिटिव प्रेशर होता है। प्लीज रिमेंबर, वो एक पॉजिटिव प्रेशर होता है। बेटा अभी भी मैंने, इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था। सपोज दिस इज सेल वॉल, एक जगह है, रिजिड है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वाटर फ्लो है तो यहां पे, वाटर लॉस है तो यहां पे है, ये गैप यहां पे है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये गैप यहां पे है। तो याद रखना है कि अगर इस सेल में अभी लॉस ऑफ वाटर है, कम वाटर है, जब वाटर एंट्री होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीछे की तरफ आता है। दैट मींस इट गोज टुवर्ड्स सेल वॉल और वाटर एंटर होता है। एक टाइम आता है जब यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म इस सेल वॉल से बराबर मेल खाते हैं, टच आते हैं। वो एक प्रेशर जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, वो एक प्रेशर जो प्रोटोप्लाज्म ने इस सेल वॉल पे अप्लाई किया है एक्सपेंशन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से, दैट मींस दिस प्रेशर व्हिच इज डेवलप्ड बाय दिस प्रोटोप्लाज्म ऑन दिस सेल वॉल, प्लीज रिमेंबर दिस इज पॉजिटिव प्रेशर ऑन द वॉल इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और दिस इज कॉल्ड एज टीपी, और दिस इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर, और समटाइम्स कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। सो आई विल राइट इट इज the positive pressure, but a positive pressure is on the walls. It is the positive pressure developed by the cell, I mean protoplasm, developed by the cell on the cell wall, on this cell wall, due to and osmosis when placed in hypotonic solution due to end osmosis. And remember, it is due to expansion of protoplasm. ये पॉजिटिव प्रेशर तब है जब प्रोटोप्लाज्म एक्सपैंड होता है, जब प्रोटोप्लाज्म यहां पे स्वेल होता है। जब भी स्वेलिंग होती है, जब भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल की तरफ आता है, दैट प्रेशर डेवलप्ड बाय दिस प्रोटोप्लाज्म ऑन दिस सेल वॉल, दिस इज कॉल्ड एज टीपी, दिस इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। इसी के साथ और एक टर्म है, when water enters, when cell gets fully saturated, I will show here, there is development of another pressure. This is cell wall. Now cell has developed the Turgor pressure. This cell wall touches this plasma membrane now. There is complete swelling, complete expansion. That means there is positive pressure on this cell wall. This is called as Turgor pressure. बेटा जब ये Turgor pressure सेल वॉल की तरफ आता है, सेल वॉल वापस में, बिकॉज इट इज रिजिड, ये वापस में एक काउंटर प्रेशर अप्लाई करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दैट मींस दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस डेवलप्स प्रेशर ऑन दिस सेल वॉल, सेल वॉल इज फर्म, सेल वॉल डेवलप्स काउंटर प्रेशर ऑन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर इज बैलेंस, देयर इज इक्विलिब्रियम। याद रखना है वो एक प्रेशर जो सेल वॉल ने काउंटर किया है, वापस किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जो वाटर फुली सैचुरेट होता है सेल में। प्लीज रिमेंबर दैट प्रेशर विच इज अगेन डेवलप्ड बाय दिस सेल वॉल बैक ऑन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। आपको मैं एक पॉइंट बताता हूं, ये वॉल प्रेशर एक स्टेज पे टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। कब होता है? जब वाटर फुली एंटर होता है एक सेल के अंदर, व्हेन सेल इज फुली टच्ड, when plasma membrane touches this cell wall, when plasma membrane has given enough pressure on this cell wall,
When cell wall has given the enough pressure on this plasma membrane, when there is what is called as equilibrium here, we say TP is equal to WP, Turgor pressure is equal to wall pressure. इसलिए मैं आपको यहाँ पे पॉइंट एक बताता हूँ. What is called as wall pressure, WP. This is wall pressure represented by WP. I will say it is the counter pressure. It is the counter pressure developed by cell wall. Developed by cell wall on protoplasm or on plasma membrane. That pressure which is developed by this cell wall on this plasma membrane, this is called as WP, this is called as wall pressure. At one stage, please remember, at specific stage, this Turgor pressure equals wall pressure here. This is equal to wall pressure. ये तब होता है when cell has fully gained this water, when cell is touched. बड़ा ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी. इसको फिर से you focus on it, you solve the questions, particularly sometimes in the exams the values are asked here and values are given by the diagrams here and you have to explain the movement of the water here. I hope you gained such concepts here, inshallah. Our next topics will be easy for we people to understand. Okay, till then, thank you very much. Best of luck.